देखिए, कुछ चंद चीज़ें हैं जो हम माशरती तौर पर भूल चुके हैं। हम बोलना भूल चुके हैं, हम सुनना भूल चुके हैं, हम सोचना भूल चुके हैं, हम समझना भूल चुके हैं। ये 4 पहलू ज़िंदगी के हम भूल चुके हैं। हम वो कुछ कहते हैं जो कहना नहीं चाहिए, हम वो कुछ सुनते हैं जो सुनना नहीं चाहिए, हम वो कुछ सोचते हैं जो सोचना नहीं चाहिए, हम वो कुछ कर बैठते हैं जो करना नहीं चाहिए। अल्फाज का चुनाव गुफ्तगू में ऐसा होना चाहिए जो किरदार की अक्कासी करे, आपकी तरबियत की अक्कासी करे, बताए कि आप किस ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है। अल्फाज के चुनाव में अगर आपने गड़बड़ कर दी और कोई नाज़ेबा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया गुफ्तगू में, तो आप अपनी गुफ्तगू को भी गिरा देते हैं उसके दर्जे से। ये बात समझने वाली है, ये बात सोचने वाली है। हम लोगों ने इसका पैरा छोड़ दिया है, इसके कोनों को हमने छोड़ दिया है। लिहाजा गुफ्तगू ऐसी करते हैं जैसे कि हम किसी मार्केट प्लेस में बैठे हुए हैं, तो ज़ुबान भी वहाँ की इस्तेमाल करने लग गए हैं, गुफ्तगू भी उसी तरह करते हैं। एक दूसरे को सुनते नहीं हैं, सुनने से पहले सोचने लगते हैं, उससे बदगुमानियाँ पैदा होती हैं। मैं वो सोच रहा हूँ आपके बारे में जो आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं, और खामख्वा कि मैं अपने अंदर एक इश्तियाल पैदा कर रहा हूँ, एक नफ़रत अंगेज़ी की फ़िज़ा पैदा कर रहा हूँ अपने अंदर। हालांकि आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा है मेरे बारे में। मैं अपने आप से जो गुफ्तगू कर रहा हूँ वो भी नाज़ेबा हो गई है। उसकी वजह ये है, द प्राइमरी रीज़न फॉर दिस डिक्लाइन इन आवर एटीट्यूड इज़ द लैक ऑफ रीडिंग इनफ। When we refer to that particular article of mine where I talked about grace and wit, okay, in the political leadership more so, it is all because people have stopped reading, and therefore what they talk to each other and quote to each other is of the base level. Okay, while people in the past, when they spoke with a lot of grace. Even the invectives, even, vitriolic language was laced with decency, with graceful words. I don't know whether you read the article in full. If you did, you would remember that I have quoted Churchill referring to the person sitting on the opposition bench, and he referred to some childhood visit to a circus, and he said, I wanted to see this boneless wonder, but my parents thought that spectacle would hurt my growth as a youngster. So they did not allow me to see it, but it has taken me 25 years of public life to see the person, to see the boneless wonder sitting right across the floor. That's the way to react. He said it all, yet said it very gracefully. Concocted a story from nowhere. I'm sure Winston, the kind of intellect he had, he must have concocted right on the floor. What does it require to concoct something? It requires massive reading. If you read 40,000 words per day, you might retain 400. And if you retain 400, you're lucky. So the kind of supply that you need to provide to your brain power every single day in order to have greater retention, is only by reading excessively. And the trick of the trade, since people are going to listen to this, the trick of the trade is nothing gets retained unless the retention is through repetition. The more you read, talk more about it. Whether the person listening to you gains or not, but you are gaining a better insight to what you have read. And you're giving it your own dimension to it, and therefore building on a thought that you read. So that's how you participate in the creation of a body of knowledge.